हेलो फ्रेंड्स, WSC बातें में मैं प्रीति ठक्कर आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम एक छोटी सी कहानी से शुरू कर। एक बार एक फार्मर था। वो बहुत सारे प्राइजेस लेकर के आता था क्योंकि वो बहुत अच्छे अच्छे क्रॉप सो करता था। पर एक बार उसका इंटरव्यू हुआ और उसको पूछा गया कि भाई आप जब भी जो कुछ भी आप सो करते हैं, क्या आप अपने अड़ोस पड़ोस में भी वही चीजें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा सुना है, तो क्या ये बात सही है? तो उस बंदे ने बताया कि हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं जो कुछ भी मेरे फार्म में उगाता हूँ वही मैं मेरे आसपास के फार्मर्स को भी देता हूँ। तो इंटरव्यूअर को थोड़ा सा अजीब लगा। उसने बोला, आपको इनसिक्योरिटी नहीं होती कि कल वो आपसे बेहतर उगा लेंगे और आपसे बेहतर प्राइस लेके जाएंगे? तो फार्मर ने बोला, बड़ा ही खूबसूरत जवाब था उसका। उसने बताया कि नहीं, पोलन्स एक्सचेंज होते हैं, बर्ड्स कहीं ना कहीं पर जो सीड्स लेकर के आते हैं, उसमें से अगर मेरे प्लांटेशन को कोई नुकसान हो गया तो उसमें मेरा ही घाटा है। तो मैं अपने आसपास वालों को भी हेल्दी ही रखना चाहता हूँ। और यही सोच के साथ उसने जो भी अपने आसपास वाले फार्मर्स थे उनको भी अपने ही वाले अच्छी क्वालिटी के बीज दिए थे। तो ऐसी ही शानदार जो सोच है वो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? ऐसे ही कुछ बढ़िया सी आज बात लेकर के मैं आप लोगों के साथ आई हूँ। और यहाँ पर एक और चीज से आप सब लोगों को कनेक्ट करना चाहूंगी। किसी के घर पर अगर आप जाते हैं तो आपको हमेशा चाय कॉफी का पूछा जाता है ना? और जब चाय कॉफी हम मना करते हैं तो नींबू पानी का पूछेगा। पर जब आपको कोई बोले कि नहीं, आप मेरे यहाँ पर आए हैं तो हमारे फार्म के ऑर्गेनिक शुगर केन जूस लीजिए, तो आपको कैसा फील होगा? यकीनन मैं भी मना नहीं कर पाई और 2 ग्लास पी लिए थे मैंने। वही जो ऑर्गेनिक फार्म की सोच वाली एक बढ़िया सी सोल यहाँ पर आज मेरे साथ हैं। वी आर मीटिंग अ ब्यूटीफुल लेडी हियर एंड शी इज नन अदर देन राधिका शाह। वेलकम राधिका ऑन WSC। थैंक यू प्रीति। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक बड़ा सा, मतलब आजकल तो बज में ज्यादा है, पर आई नो व्हाट हार्डवर्क इट टेक्स बिहाइंड। और आप तो मतलब यू हैव बीन इन सो मेनी अदर फील्ड्स। सो व्हाट वाज योर थॉट अबाउट द होल ऑर्गेनिक स्टार्ट ऑफ द फार्मिंग? और आपके कॉन्सेप्ट को समझना आई थिंक WSC की विमेन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कुछ अलग तरह से सारी चीजें कर रही हैं। तो जरूर से अपना थॉट शेयर करिए। द रिवर फार्म एक ऑर्गेनिक फार्मिंग कम्युनिटी जो है, इसका इंसेप्शन इस तरह से हुआ कि मैं ग्रैटिट्यूड में बहुत बिलीव करती हूँ। माय फिलोसॉफी ऑफ लाइफ इज ग्रैटिट्यूड। तो पहला ग्रैटिट्यूड आता है मदर अर्थ की तरफ। तो मदर अर्थ को ग्रैटिट्यूड में हम क्या दे सकते हैं? तो वन थॉट वाज सस्टेनेबिलिटी, अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, और उसमें आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये मैंने बहुत सालों से मैं सोच रही थी ये आइडिया कि किस तरह से करें, शुरू क्या करें। तो 5 साढ़े 5 साल पहले फिर मैंने मेरे फार्म पे ऐसे ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिसीजन लिया कि इसमें स्ट्रक्चर इस तरह से किया मैंने कि अलग अलग फार्मलेट्स बनाए हैं छोटे छोटे, जिसको पीपल रेंट देम आउट। मतलब एक ओनरशिप होना ज़रूरी होता है। कोई भी चीज़ अगर हम फ्री में दे दें या कुछ ऐसे, तो एक मैं टोकन अमाउंट से मैं उनको 3 महीने के लिए, एक साइकिल होता है जो सीज़न का, वो साइकिल पे वो रेंट कर सकते हैं। जो हम फार्म के प्रोड्यूस उगाते हैं, जो भी वेजिटेबल्स, वो हम उनको वंस अ वीक देते हैं। अराउंड 12 to 13 हार्वेस्ट उनको मिल जाते हैं इसमें विद इन 3 मंथ्स। तो उनको ये एक तरह से अपनी फैमिली को वो लोग ऑर्गेनिक फूड दे सकते हैं। वो इनका ये एक बेनिफिट उनको मिलता है। उसके साथ ये एक कॉन्सेप्ट जो है, उसमें जो बिलीव करने वाले होते हैं वो जुड़े हैं। अभी बहुत लंबा रास्ता है मेरे लिए, पर आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आई थिंक द थॉट इन इटसेल्फ इज वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। जब कोई चीज के आपके पास ओनरशिप होती है तो आपका एक उस चीज के प्रति नजरिया बिल्कुल बदल जाता है। हाँ, और एक अपनेपन का एहसास भी हो जाता है, बिकॉज दे आर ओनिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। तो और ये भी थॉट आई थिंक दैट इज अमेजिंग कि आप
ऑर्गेनिक खाना खा भी सकते हैं, फिर भी आपको बहुत ज्यादा आपका जो काम वाला पार्ट है, या जो आप बोल सकते हैं कि हेडेक रहता है फार्मिंग का, गार्डनर का, आपको लैंड का, सारी जो प्रॉब्लम है, उन सब चीजों का आपने वन स्टॉप बिल्कुल सॉल्यूशन सबको दे दिया है. बिल्कुल. सो इट इज वेरी ब्यूटीफुल थॉट. आपके यहाँ पर हार्वेस्टिंग जो होती है उसमें इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव दिस केमिकल फ्री, पेस्टिसाइड फ्री थिंग्स, राइट? तो उसके लिए आप क्या स्पेशल प्रिकॉशंस लेते हैं? बेसिकली एक बहुत सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जैसे अमृत जल तो हम यहाँ बनाते हैं, हम खुद का कंपोस्ट बनाते हैं. सो कंपोस्टिंग इज़ ऑल्सो वन होल गेम जो हम अपने यहाँ से ही जो लीव्स वगैरह जो ड्राई लीव्स गिरते हैं उसका हम खाद बना देते हैं, तो वो सब वहीं जाता है वापस टू द फार्मलैंड. उसके साथ हम बायो एंजाइम्स बनाते हैं जो फ्रूट पील्स और वेजिटेबल पील्स से जो छिलके उससे हम बनाते हैं, तो वो हम डालते हैं जिससे पेस्ट अटैक वगैरह हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं. देन देयर इज एप्सम सॉल्ट, देन देयर इज नीम ऑयल, बोन मील, ये सब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक वेज है जो ऑफ कोर्स जो केमिकल और फर्टिलाइजर्स या ये सब पेस्टिसाइड्स डाल के जो उगता है वो एक बाउंटीफुल प्रोड्यूस उगता है. यहाँ पे ऐसा नहीं होता है जिसकी वजह थोड़ा से छोटा छोटा होता हाँ है. जिसकी वजह से एट टाइम्स दे थोड़ा डोंट लुक दैट ब्यूटीफुल आल्सो, यस जो हम एक तरह यस का मतलब हाँ. देखते हैं पर हाइब्रिड वाला. इट्स प्योरली एंड प्योरली ऑर्गेनिक, तो हम इस तरह से ये सब डिटर कर सकते हैं फॉर पेस्ट और वो सब. हाउ डू यू अपडेट योर स्टाफ, या जो सारी चीजें मार्केट में आजकल तो ऑर्गेनिक इज सो मच इन कि उसके रिसर्चेस भी उतने ज्यादा होते रहते हैं, उसका उसमें कुछ ना कुछ नया भी आता रहता है. रिसेंटली हाइड्रोलिक फार्मिंग इज सो मच इन. यू तो ऑलरेडी हैव सच अमेजिंग लैंड, तो इतना ब्यूटीफुल फार्म है, तो आपके लिए तो लैंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो बाकी चीजों में आप कैसे अपडेट रहते हैं? बेसिकली आजकल जैसे आपने बोला कि बहुत सारा अवेलेबल है ऑन गूगल एंड एवरीथिंग, तो ये सब तो हम देख सकते हैं. उसके साथ बहुत सारे ग्रुप्स बने हैं, जैसे अहमदाबाद में भी ट्री वॉक्स और इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनका मैं पार्ट हूँ, और उनमें से भी एवरीबडी इज शेयरिंग देयर ओन लर्निंग, देयर ओन जर्नीज. तो ये सब करके इन सब लोगों से जुड़ के ही हमको एक दूसरे से सब इंफॉर्मेशन शेयर करके कि मैंने ये ट्राई किया तो ये इसमें मुझे सक्सेस मिला, ये नहीं हुआ, ये वो, तो इस तरह से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी बहुत सारी मिल जाती है. और ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत गूगल करके और मतलब पढ़ के हम सो नाइस एक्चुअली. और काफी चीजों में मतलब ये कई बार ऐसा होता है कि आउट ऑफ सी यू आर कमिंग फ्रॉम सच एन अफ्लुएंट फैमिली, कि ये चीज में आपको काफी बार ये भी होता होगा कि बहुत ज्यादा मेहनत है, और ऑफ कोर्स इट इज अ पैशन. सो नथिंग बीट्स योर पैशन, बट फिर भी एक कहीं पर लोग कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं. यू स्टार्ट समथिंग बट देन being in that process continuously is a little challenging. So how do you put up with those pressures? बेसिकली हाँ, ये थोड़ा आपने सही सवाल पकड़ा कि किस तरह से इसको हम रेजिलियंस हम इसमें दिखा सकते हैं. तो इट्स प्योरली अ प्ले ऑफ पैशन फॉर मी. दिस इज नॉट अ कमर्शियल थिंग ऑल्सो फॉर मी. ये जो मैं टोकन अमाउंट भी लेती हूँ वो सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स को जाती है, वरना ये सब मेंटेनेंस इज टोटली ऑन मी. एंड हाँ, जैसे फैमिली की बात करें तो एक बार माय फादर ओनली सेड कि ऐसे जैसे एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के ऐसे सब्जियां उगाने के लिए नहीं जा सकते फार्म पे. तो ऐसे सब ने कुछ ना कुछ तो ऐसे बोला कि हाँ ये क्या तू लेके बैठी है, ये सब ऐसे कैसे कर सकती है, नहीं हो पाएगा ये वो. पर जब ये एक आपका खुद का पैशन होता है तो आप उसमें डटे रहते हैं. एक चैलेंजेस जो होती है तो यू फील कि नो यू आर इन दैट पोजीशन कि आई हैव टू फाइट दोज चैलेंजेस एंड प्रूव माई सेल्फ. सो एक ये जो होता है अपना, तो उसके हिसाब से
मैं इसमें डटी रही थी। सच अमेजिंग मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट रखना भी बहुत हाँ ज्यादा जरूरी रहता है। हाँ एंड ऑफ कोर्स व्हेन वी आर विद लाइक माइंडेड पीपल, तो वो हमेशा आपको एक अच्छा सा बूस्ट भी देता रहता है। आप लोग यू जेलिंग विद सच पीपल हु आर ऑलरेडी हाँ हैविंग द सेम थॉट प्रोसेस, तो वो भी एक बड़ा अच्छा आपको कर देता है इंस्पायर। इसके अलावा राधिका, आई हैव नोन यू फॉर लॉन्ग एंड आई नो दैट बीइंग अ वाइफ टू अ philanthropist, सोशल सोशल वर्क उत्कर्ष सर ने इतना कुछ करते थे वो, तो ये वो ऑलवेज बीन हिज बैकबोन। तो वहां पर भी आपने काफी मतलब उस टाइम पे भी काफी चैलेंजेस रहे होंगे। सो हाउ दैट इंडिविजुअलिटी ऑफ राधिका हैज ऑलवेज बीन established there also. So that is where my river farm and my many other activities, जैसे I also run one old age home, शांति निकेतन सीनियर लिविंग करके। तो ये मेरी अपनी पहचान है जो मैंने अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी के लिए, तो ये है रिवर फार्म है। दिस इज ऑल व्हाट गिव्स मी प्लेजर एंड आई हैव ऑलवेज लर्न फ्रॉम माय हस्बैंड कि अगर आप उस पोजीशन पे हो कि आप you can touch lives of many people, then you are blessed and you are honored. So please use those resources and that infrastructure to connect with more people and give back to the society. तो यही सोच के हिसाब से चलते, ये मेरा अपना खुद का जो है कि हाउ आई एम गोइंग टू बी कनेक्टेड टू द सोसाइटी एंड गिविंग बैक टू द सोसाइटी, because society has given us so much, so you always should pay back. Today the youth is in dilemma with social media and their way of life and things, everything is changing so much. At some point they're very much aware. They're only getting conscious when they have some issues, shifting towards this organic stuff or healthy lifestyle. So what would you like to give message to today's youth regarding their lifestyle and their phase? Yeah, I feel it's very, very important to look after your health. First thing is physical health. Physical health अगर आपकी अच्छी रहेगी तो that will be beneficial to your mental health and it will also reflect in your work areas. आप काम बेहतर कर पाओगे जो भी आपका, that will also reflect in your emotional health, which will be reflecting in your social and your family areas. तो बेसिकली एक पूरा कास्केडिंग इफेक्ट होता है। तो ये शुरू होता है फिजिकल हेल्थ से। आप जो आपका क्या आप डालते हो आपके शरीर में वो दिखेगा बाहर, और फाइनली वो ही आपको, and at time the realization is too late, then या change करना काफी चीजें मुश्किल हो जाता है। बच्चों को यही मैं बहुत बोलती हूँ, मेरे खुद के बच्चों को भी बहुत बोलती हूँ कि डू नॉट चूज, इट्स नॉट अबाउट ओनली ऑर्गेनिक। सी आई नो दैट दीज आर टफ चॉइसेस। हर बार आप ऑर्गेनिक नहीं खा सकते, शायद नहीं मिलता है, हमारा स्ट्रक्चर भी वैसा है, पार्टी गए ये वो कुछ भी, तो एवरी टाइम यू कैन नॉट be having organic vegetables and grains. Sometimes you do have, but जहाँ पे आप कर सकते हो तो वो एक चॉइस करो. That is what I, and also not to have packaged foods, ready to eat foods, and यही सब instant सब जो होता है वो सब अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो that is the best thing, is what I feel. I know you, Radhika, travel a lot also. You're always, means I've always heard you going here or there, and you're always on go half of the time. Yeah. So how do you manage choosing right food at that point of time? Again, there's always a choice. अगर आप देखेंगे तो फॉरेन ट्रिप्स अगर है तो वहाँ पे भी एक तरफ पिज्ज़ा, पास्ता, सैंडविचेस, ब्रेड सब है, दूसरी तरफ यू विल ऑलवेज हैव सूप्स, वेजिटेबल्स, ग्रिल्ड वेजिटेबल्स, सैलड्स, तो ये फ्रूट्स वहाँ पे तो इतने बढ़िया, तो यू ऑलवेज हैव अ चॉइस. सो
हमको पता होना चाहिए कि क्या हमारे लिए सही है, सो उसी तरफ आप अपना हाथ बढ़ाओ और चूज करो. That is like, even in India, wherever you move, it's always, there are available choices where you can choose a healthier option. Yes, so I'm true. not saying you don't eat. If there are cheat Once in, days, yeah, you once in a while indulge. you are, yeah. हाँ, you like to indulge. Of course, जाना है पार्टी में, बाहर गए हैं तो खाना भी चाहिए, ऐसा भी नहीं है, पर बैलेंस करना चाहिए. So that is the whole key to the whole thing. Would like to have your point of view on joint family system that is breaking down currently. I know you have a big family and you all are so well connected. So maybe some message to today's current scenario. It's always difficult to stay in a joint family, but it feels like it, but always look at the positives. And if you, I always feel कि positives जो जो है उसको आप maximizer lens से देखो, और जो negatives है उसको minimizer lens से देखो, and that is how everything will fall in place and it will work. And it's always, connections are always, Yeah. you don't come across those mental and emotional health Yeah. problems if you are always connected with the family. Right. That does. Today, there is lot of, buzz about exercising and gym and superfoods and everything. So where do you put yourself there? And what is your fitness mantra? Yeah, I really like this new thing about superfood and going vegan and all of that. But at the same time, I would say don't blindly just follow because it's a trend or because it is like so much in or going viral or whatever. Just every body type is different. So see and choose what your body prefers. Yes, so or true. what your body can take or what you feel good about. After having something, if you feel good about it, that means your body is accepting it. So try and analyze all of that and include that in your life rather than just blindly following. Yes, there is actually everything that is coming from out of the country again, discovered products that Right. come in expensive form are Right. mostly accepted by today's generation. Yeah. Like quinoa came, so now we are aware about the millets, Yes. right? Yes. So, what do you feel about those superfoods that are alien to us, and what we already have in our plant, our Of course. farms? They are the best. I think the millet here, what has been announced, it's the right thing because that awareness is so important for the younger generation and even for many like us, because these are all the foods which are forgotten, and they are like going back to roots. We must do that, and it's amazing how they work for your body. So the superfood which is indigenous, जो हमारे यहाँ के हैं, They are good. उसी Our को- DNA knows them. Yes, Our, yes. they are good for our हाँ, gut health as हाँ, well. उसी को follow करना चाहिए rather than just blindly accepting what's coming from the West. Any incident that you can think of that the craziest moment of your life? Some things that bring a smile to your face. You can recollect some incident and share with our WSC females. Smile to my face, yes. I have many school field trips happening in my river farm. So that I'm like, when little KG and nursery children come here and their inquisitiveness, and when they see all these vegetables going, they're very fascinated because for them it's like पता नहीं जैसे vegetables are grown in supermarket or what. They don't Yeah, know. they don't know. There's no awareness in children, sadly. So for children to know that food is grown by hard work of farmers, there's so much of labor, effort, heartburn that has gone into it. तो ये बहुत ज़रूरी है आजकल बच्चों को बताना, समझाना कि you also have to be grateful for the food on your plate. Yes, so true. Actually, they see everything ready, हाँ. so they forget that feeling Yeah. of gratitude हाँ. and
एक मतलब फर्स्ट करते हैं फर्स्ट कि करते नहीं हैं। खाना है, दिस इज नॉट गुड, ये वो, तो ये आपको सिखाना होता है मदर्स को। So nice. So let our audience know how does Radhika's day start and how does it end. My day starts with a morning walk. I very religiously walk for 45 to 50 minutes. After the morning walk is just time spending with family, little bit of morning coffee, breakfast and all. Then I have my yoga session. After that, something whatever that I need to look into the house. I go to the office also. So after lunch, I go to the office. 2-3 hours in the office. Evening 4 o'clock is to for maybe some other personal work, yeah, meeting a friend or some anything, any good workshop that is regarding farming or some learning or anything. Then I do other social work like that, my Shanti Niketan senior living. So my day is not typically structured. It's a very flexible day as per my different things. I'm also learning bridge play, so some I also have my 1 or 2 sessions on that. So many of, because I like to learn a lot. River Farm also has lot many workshops ongoing, right? Yeah, Once yeah. in a while, there I see that there is a cooking workshop Yes. here, or maybe some creative clay work or Yes, something yes. like that. So I have many verticals at the river farm. Like I have weekends pay. I used to have dinners in the winters, but that was COVID times. It was very well received by everybody because there were lesser options of going out and all. Then a wellness retreat in the morning, yoga session, and then breakfast and a talk on health and all. Then I also had a Christmas carnival. Then there was a sensory play for kids where they would harvest vegetables and all of that. Also a vegan cooking workshop, zero waste cooking workshop. Wow. Like absolutely zero wastage may how you can cook, because I'm into sustainable lifestyle also. So you're not only speaking, but you're practicing what you're speaking, Absolutely, right? absolutely. So yes, that Yes. does make impact. That's a very good thing that millet here has been, because that will also motivate more and more people to get into this, because there are many people who just follow because it's a trend or because it has been Yes, advised there is a by buzz in the market there is and a people are buzz, doing and it. So honorable PM has also advised. advised. So all these factors do work. As far as I'm concerned, I have always been a fan of all these things. इसलिए मेरा तो ये पहले से होता ही है कि ज्वार एंड बाजरा एंड लाइक विंटर में Ragi and ये मक्की का लोट और ये सब we keep on changing and using always at home. That's a good thought actually. And millets basically sustainability also comes in with Ha, millets, yes. because the crop doesn't require much water as such, and they are good in nutrition, of health course. boosting. So And it's supporting our farmers. yes, So that is most important. and they are naturally organic. Yes, The best thing about absolutely. millet is that they are naturally Absolutely, organic, right? yes. So it's very easy to do the plantation of millets. They have a short cycle, Right. so your farm soil also remains fertile, and they have lot of Absolutely. pluses, Well right? There is one thought going around that organic is something that a higher class of people can afford, because it comes at a cost. So what is your say to that? On the contrary, I feel that it's not like that at all. Organic does not mean expensive. Maybe if anybody believes in like that, then maybe they have had that kind of an experience where somebody has, Sold them more at yeah, higher cost maybe or something something. like that, personal experience. Otherwise, it's not like that. It's absolutely at par. Or as far as river farm is concerned, I'm to not even commercially doing it. So Yes, so mera, I think you're to doing it as I think
the way I see things and the way you're taking the rent, Yeah. I think it is more like a social work, that you're Absolutely. doing it for your friends who, Yeah. or circle who has rented the farm. For the But then society, yeah. for other people, it's always that one though we are not very sure that we are हाँ, getting organic or yeah, not, yeah, like you said. yeah. Then second factor comes up is that ये महंगा है, हाँ, हम हाँ, अफोर्ड नहीं कर सकते, नहीं ये कर मतलब पैसे वाले लोगों का इट्स देयर हाँ, इन थिंग, वी नीड टू गो विथ वॉट एवर इज लोकली अवेलेबल. तो उसके लिए एक थोड़ा सा मतलब आई थिंक देयर ऑल्सो some awareness needs हाँ to go some from हाँ our if you end. do some research and some अगर बिलीव करते हैं और अगर ये करना है आपको तो देर आर वेज हाउ टू गो अबाउट ट्राई टू रिसर्च कि कौन है जो जेन्यूनली करता है थोड़ा ऐसे हाई कप प्राइस नहीं कर तो मिल जाते हैं ऐसा भी नहीं है फार्मर्स डायरेक्टली Yes, you अब definitely. आजकल मन होय तो माड़वे हाँ जवाए. मारवे जवाए So you need यस to find a way out. यस Yes. One more question. अगर if you had a power to be a celebrity, which celebrity would you want to be? Nobody. Nobody. Power. Because I feel everybody is unique. I am unique in my way, you are unique in your way. Everybody has their own specialities and uniqueness. Celebrate that. Wow, such an amazing answer. And people always have some, they would want to be like someone. But this is amazing. You're celebrating yourself. If you were a superhero and you were given power to change one thing, what would that be? Apart from the farm life that you're heading here. It would be too much of war and hatred and everything that we see around in the world. I would change all of that because so many innocent lives being taken. When you see all this, and when you, I mean, it's heartbreaking. So I feel I would change that if I had the power. Bring peace into this world. What is your soul food? Greens, salads. So, I mean, I just can live on that. Any kind of salad, green vegetables, I just live on that. तो कई बार मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि ये अभी बकरी आ गई सब पत्ते खा जाएगी. Whenever we sit on a table, dinner table, or there's a buffet or something, I always Prefer to have rush for the salads, the leaves, and all of that. So they always call me, she's a bakari. such a cute name. But it's wonderful to be connected to you, Radhika, and it was amazing knowing about your journey. And I think it's going to inspire all the females out there to go out and do something that available resources and give back to the society. Thank you. Thank you so much for having us here. Thank you for having me.